हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल pythonji। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या और आज की वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं चेस बोर्ड यूजिंग पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। गो टू सर्च बार, search for IDLE. As you can see, IDLE Python 3.11 64-bit. Open it. Then go to File, select New File, save this untitled file. Give a name to your file and select type of file, Python files, and save it. Then write your code. This is our code to create chessboard in Python turtle graphics. First of all, we have to import turtle and then write our code. Like create screen object, create turtle object, method to draw square. These are our comments. Then driver code, set screen, set object speed. Then loop for board, not ready to draw. Then set position for every row. If you want to write this code, pause the video and write it. Then ready to draw. Then row. For J in range 8, conditions for alternative colors. Use if else. Then fill with given colors. Start filling with colors. Then stop filling, hide the turtles. So this is the code to draw chessboard. Then go to run module or press F5. सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। तो हमने पहले ही इस अनटाइटल फाइल को सेव कर लिया था, तो हम ओके प्रेस करेंगे। पाइथन टर्टल ग्राफिक्स इज ओपन और ये हमारा चेसबोर्ड रेडी हो रहा है। सो एज यू कैन सी, हमारा चेसबोर्ड रेडी हो चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक देखेंगे पाइथन टर्टल ग्राफिक्स से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो फॉर मोर।